मैटर को हमने कल भी डिफाइन किया है, ठीक है। हम इससे पहले भी बता चुके होते हैं, तो बहुत इजी होता है. Anything that has mass and volume is matter. And particle theory says everything in the universe is made up of very small particles. We call them atoms, we call them molecules, and they are in constant motion all the time. We'll study some different points of this particle later on in this chapter. So let's not go with the difficult points of this topic. Instead, just go with the easier parts of this portion, states of matter. Now, this is the important part. This part is important because this is a very good differentiation or bifurcation between the states of matter, solid, liquid, and gas. If you can't hear me or if you can't see this video, please let me know. In case that happens, let me know through chat if your mic is not working. All right. So let's go with the example first. It wasn't clear to you yesterday, the examples, the basics, because there wasn't no diagram explaining the fact that how the particles were arranged and why they have a fixed shape or why they have a fixed volume, whatever that was. All right. So let's go through this one by one, step by step, row by row. First of all comes the particle arrangement. The solids are so tightly packed, as you can see in this diagram. Okay, let me use some annotations. Okay, the particles are so tightly packed, as you can see in this diagram. So the liquids are somewhat not so closely packed. Sarhan, turn off the video. And stop playing with the computer. It is supposed to be you just listening to me. Sarhan, turn off the video. Good. So liquids, when it comes to liquids, the liquids are a little bit far away and not as tightly packed as the solids were. Coming on to a gas, the gas are so much far away from one another. As you can see, there are very less number of particles in the same volume, and they are very much far away from one another. This diagram is small, but what we use for these words are far away from one another. If the particles are too close to one another, the forces or the attraction between the particle, here they mean the word attraction from the forces, they are actually the strongest. If you're very close to one another, you're probably good friends. That's what the forces of attraction means. All right. So that is the case for solid, the strongest being the closest, and the opposite is true for gas because they are farther from one another. They are very far away from one another. Hence, the forces are weaker. So, excuse me, sir. G. सर नीचे ना क्या कहते हैं ग्रीन सा आ रहा है ग्रीन पे ना अब ठीक है थैंक यू बेटा ग्रीन नहीं रेड कलर की लेजर आ रही होगी वो स्पॉटलाइट है वो आपको शो करने के लिए द रेड लेजर नहीं सर आज ग्रीन हुई थी पहले अब ठीक है पहले ग्रीन हुई अच्छा ठीक है all right so motion of the particles in solid as you can see they are so tightly packed so how would they be able to move no of course not they won't be able to move from their positions they won't be able to change their position why because they are so tightly packed okay okay I explained this motion criteria giving a simple example ठीक है लेट्स सपोज आपकी क्लास में एक 3-सीटर सोफा पड़ा है और लेट्स सपोज उसके ऊपर 3 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं सपोजिटली उसके ऊपर बिलाल बैठा हुआ है उसके ऊपर सरहान बैठा हुआ है और उसके ऊपर हसान बैठा हुआ है ठीक है 3-सीटर sofa 3 people can sit very comfortably in a 3-seater sofa even they can move a little bit here and there but if I ask a 4 person to sit over there मैं अहमद शिराज को बुलाता हूँ और उसे कहता हूँ कि आप भी सोफे में बैठ जाएं then the 3 people will have to adjust a little bit so that Ahmad can sit over there.
सो हसान भी अपने आप को एडजस्ट करेगा, सरहान भी एडजस्ट करेगा, बिलाल भी एडजस्ट करेगा, और फिर वहां पर हमारे पास, ठीक है, फोर्थ पर्सन अहमद बैठ सकेगा। ठीक है, जब वहां पर अहमद भी बैठ जाता है तो उसके बाद अगर मैं किसी और स्टूडेंट को भी कहता हूँ कि यू ऑल्सो गो एंड सिट ओवर देयर, देन it's very difficult for the fifth person to go over and then sit over there. It's also difficult for the four already sitting over there to make some space for the fifth one. ठीक है, तो ये बात बड़ी आसानी से समझ में आती है कि हमारे पास तरतीब इसी तरह से होती है कि जब आपके पास स्पेस लेस होती जाती है तो चीजें टाइटली पैक होती जाती हैं, और जब वो टाइटली पैक होती जाती हैं, ठीक है, तो जब वो टाइटली पैक होती जाती हैं तो मूवमेंट बिल्कुल लिमिटेड हो जाती है, हेंस सॉलिड अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, जब हम लिक्विड्स में आते हैं तो हम इसे प्ले करते हैं ताकि आपको ये पार्ट नजर आए। देखिए, ये इतना बड़ा सारा प्ले बटन सामने ना आए, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, so when it comes to liquid, particles can move a little bit around, ठीक है, and in case of gas, particles move very fast in all directions. Why? The gas molecules have a lot of space in between themselves. Okay? So when it comes to gas, their movements are much stronger, all directions, and they can move almost in any type of motion. While in case of solids, it's very fixed. So what happens to the shape of the solid? Its shapes it's fixed. Why? Because the particles are tightly packed. The particles have their own shape. In case of liquid, there is no fixed shapes because this particle can move, and hence it takes the shape of a container. This specific phrase, takes the shape of a container, is very easy to explain. आप पानी की बात करते हैं, पानी एक लिक्विड है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वाटर को पुट करेंगे ग्लास में तो उसकी शेप भी ग्लास की तरह की हो जाएगी। आप वाटर को पुट करेंगे जग में तो उसकी स्पेस जग जैसी हो जाएगी। जब हम आपस में खेल रहे होते हैं किसी फनी डेज पर या लास्ट डे ऑफ स्कूल पर, तो हम वाटर बलून्स फिल करते हैं सारे गेम को कंटिन्यू करने के लिए, तो वाटर की शेप बलून में आ जाती है। So liquids actually take the shape of a container, and not just liquid, this is also true about gases. ठीक, तो आई होप ये बात बड़ी अच्छी तरह से क्लियर होती हो। यहां तक अगर किसी को कोई भी पॉइंट ना समझ में आया हो तो पूछ लें। Alright, continuing. Compression. Solid cannot be compressed because they are already very tightly packed. And same is the case for liquids. Liquids are also tightly packed, not as tightly packed as the solids were, a little less tightly packed, but still, we cannot compress it. When it comes to gas, there are a lot of portion that is empty in between the molecules. There are a lot of spaces. So what happens is that we can, of course, compress it. The particles would come closer. The spaces would become less and less. And that's how the gases can be compressed. When we talk about volume, the solid has a fixed volume. The liquid has a fixed volume. The gases, however, don't have a fixed volume. Their volume can be changed from time to time or can be compressed. Sir, I have a question. Ji beta. Sir, why cannot liquids be compressed? Let's call it liquids can be compressed in some cases, but in order to keep the whole statement simple at O-levels level, because it is the basic level, so we say we cannot compress them. All right, that doesn't mean this is going to be true. What we say over here कि आपका level इतना basic और इतना छोटा है कि हम एक बात जो मुकम्मल तौर पे सही नहीं है, I understand, आपकी ये ज़हन में क्वेश्चन होगा कि कुछ liquids तो जरूर compress हो सकते होंगे, and you are very right, you are true.
जी बेटा, कुछ लिक्विड्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कंप्रेस हो सकते हैं, वो सारे लिक्विड्स कंप्रेस नहीं हो सकते, लेकिन कुछ हो सकते होते हैं। तो ये बात तो ठीक नहीं है, लेकिन समटाइम्स आप अपनी क्लासेस में ये बात देखेंगे कि आपको आसान तरीके से समझाने के लिए, अभी आपको बेसिक बात बतानी है, एडवांस लेवल की बात नहीं बतानी, तो हम आपको बात का वो हिस्सा सिर्फ बताएंगे जो आपके लिए याद रखना और समझना आसान हो। जब आप बड़े होंगे, आप इससे आगे ओ लेवल से आगे ए लेवल में जाएंगे, एफएससी में जाएंगे, तो फिर हम इस बात को थोड़ा सा और चेंज करेंगे और जो एक्सेप्शनल केसेस होंगे उनको भी डिस्कस कर लेंगे। यानी कि बेटा इस अंदाज में कहना कि उस टाइम पर जाकर के हाँ, ज्यादातर लिक्विड्स बेशक कंप्रेस नहीं होते, लेकिन चंद एक लिक्विड्स ऐसे हैं जो कंप्रेसिबल हो सकते हैं, और वो ये लिक्विड्स हैं। ठीक, तो इस अंदाज में बात की जाएगी। आपने बहुत अच्छा किया ये क्वेश्चन पूछ लिया। ये बात मैं ओ लेवल्स के स्टार्ट में समझाता हूँ, पहले दूसरे क्वेश्चन पर ही समझाता हूँ, तो ये अच्छा हुआ ये हमने आज डिस्कस कर लिया, और ये बात आप लोगों को अब क्लियर रखनी होगी। बहुत सारी बातों के केस में ऐसी बातें आपकी बुक में लिखी होंगी, ओ लेवल्स की बुक में, जो कि एंटायरली ट्रू नहीं है। ठीक, लेकिन चूंकि हम बेसिक लेवल पे हैं और सारा का सारा दुनिया का नॉलेज एक साथ नहीं दिया जा सकता, शुरू में हम आसान बात बताते हैं, फिर उस बात को आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, ताकि आप भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर चुके हो और आप उस बात को समझने की कैपेबिलिटी भी रखते हो। ठीक है, तो विद द टाइम उस बात में हमने जो चेंजेस करनी होती हैं, जो एक्सेप्शन समझानी होती हैं, जो रूल्स को थोड़ा सा फर्दर एलैबोरेट या कॉम्प्लिकेट करना होता है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ करते हैं। So not just in this thing, not just in this topic, this is going to happen all during the entire time of your course book. हम बहुत सारी चीजों पे आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बताएंगे। The statement would not be entirely true. उस स्टेटमेंट में कोई एक्सेप्शन, कोई ऐसे पार्ट्स निकल सकते होंगे जो ठीक नहीं होंगे, जिनको हम अपडेट कर सकते होंगे, जिस पे फर्दर नॉलेज आ सकता होगा, या जो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते होंगे उस स्टेटमेंट से, लेकिन फिर वो हम हायर लेवल्स पे बताएंगे। ओ लेवल में हम अपनी बात को सिंपल ही रखेंगे, ए लेवल्स में जाकर फिर उस बात की कॉम्प्लिकेशंस या उसके एक्सक्लूजन्स या उसकी एक्सेप्शंस, इस तरह की चीजें स्टडी करेंगे। बात क्लियर हो गई? Yes. गुड। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस बिफोर आई मूव ऑन? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, so moving on, this means we can get back to our book and we can study the exact table from our book, and that table is also going to discuss density. So these diagrams would be good enough for you to explain density. So what I am going to ask from you at this point is to please keep these diagrams in mind, how a solid is represented, how a liquid is represented, and how a gas is represented. Keep that in mind. The solids are tightly packed, and as many particles as we can put up in a specific area, we put those number of particles. The number of particles are a little less for that area in liquids, hence they have a little bit spaces among them, hence they can move a little bit but not too much. And there are a lot of empty spaces in gases, so they move around as they like, they move around as they want to, in any speed, in any direction as they want to. So there are very less number of particles. ठीक, मैं समझाने के लिए बच्चों को कुछ फनी स्टैंसेस इस तरह से भी पिक करता हूँ कि आप इमेजिन करें कि आपकी C1 की क्लास है, और एक दिन ऐसा है कि जब आपकी क्लास में से ज्यादातर स्टूडेंट भी एब्सेंट हैं और टीचर भी उस दिन नहीं आया है, और अभी कोई एडमिन भी चेक नहीं कर रही है, द क्लास इज फ्री टू मूव अराउंड, बस 3-4 शरारती शरारती बच्चे सरहान जैसे आए हुए हैं। ठीक है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, वो सारी क्लास में फिरते रहेंगे, गप्पे भी लगाएंगे, बातें भी करेंगे, जब तक टीचर नहीं आया। तो ऑफ कोर्स हम ऐसे फील कर रहे होते हैं जैसे ब्रेक टाइम है। तो थोड़े से गंदे बच्चों की क्लास, ठीक है, मैं नाम पहले ले चुका हूँ, आपको पता चल चुका होगा। तो वो गैस है, सही। अगर थोड़े से स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए हैं तो वो लिक्विड है, जब अपनी नॉर्मल काउंट को पहुंचे हैं। और जब हमने 4 क्लास में जितने बच्चे एक क्लास में फंसा दिए, बेचारा कोई किसी से ना बात कर सकता है, ना हिल सकता है, ना मूव कर सकते हैं, और उधर से डिसिप्लिन प्रेशर भी है, तो हमारे पास सॉलिड। ठीक, तो हम एक छोटी छोटी ऐसी टर्म से, डेली लाइफ रूटीन से easier examples put up कर सकते हैं in order to understand science, in order to understand the simplest things or the basic rules of science. ठीक है, so consider solid in that way, liquid in the way that I have described, and gas to be a class of naughty boys. ठीक, so Excuse me, sir.
जी बेटा. Sir, do we have to draw this table? No, not yet. Okay. Actually, I'm going to divide the table in this book in two parts, and I'll explain it right away. Just give me a moment. What I'm going to Excuse do. me, sir, we can take a screenshot of it. Yeah, sure, but you don't need to. Actually, there is a very similar diagram present in your book. If you want to take a screenshot, I'm Okay, fine sir. by that. Go ahead, take a screenshot. I can wait. Otherwise, let me tell you, you do not need screenshots. The entire recorded class can be given to you in the group. Okay? But if you need a specific screenshot, go ahead. I don't mind. You can do it at any point of time. Okay, sir. All right. What now I'm going to do, I hope you have taken the screenshots or saved them at your end. What I'm going to do now is that I'm going to go ahead and stop sharing this slide, and I'm going to move back to our book. Just give me a moment to do that. So we were discussing a small table in our book. That was page number 22. And at the bottom of the page, we had the table. But this table is too short. The table given on the slide was very much helpful because all the things that have been written over here were there, as well as some few more things, a diagram and explanatory stuff. Okay? So what I'm going to tell you is that where that part of table is present in your book. Let's go to that. I'm going to go move a few pages ahead. Just a minute. And show you where that is located in your book. Sir, page number 22. Yeah, right. There you go. This is page number, no, 37. It's actually present on page number 37. Because this topic exactly is known as kinetic model of matter or model of particles. So this is present on page number 37 on your book. Okay, so don't worry the exact diagram or how the particles are related or how they are arranged or if they're regular or not, if they're able to move or not, what kind of motion do they show. Almost everything that was given on that slide is present on this table. But as this is bifurcated into two different parts in your book, so हम भी बेटा ऐसा करेंगे कि जैसा आपकी बुक में दो अलग-अलग टेबल्स में ये बात समझाई हुई है, तो हम भी दो अलग-अलग टेबल्स में इसे कवर करेंगे. ठीक है? ये टेबल अपने पॉइंट पर ही स्टडी करेंगे. अभी हम सिर्फ ऐसा करते हैं कि उसी टेबल की हद तक रहते हैं और सिर्फ उसी को अंडरस्टैंड करते हैं. Alright, clear enough? Yes, sir. Yes, sir. So let's move back to our original page. That was only for reference. You do not need to go through page number 37 or that diagram for that purpose. So moving back to the table we were originally at. So now just keep the diagram, the imagination in your mind and take a look. The solids has a fixed volume, so does the liquids. The gas has no fixed volume, it actually expands to fill the entire container. So the gases keep expanding to whatever portion they can. Consider it as a class of naughty boys. They might get out of class, they might roam through the entire school or the entire portion or the entire gallery, even if they get some space to go around and make some jokes. Okay? That's just for understanding. Moving on to shape, the solids have a definite shape. Liquids and gases have no definite shape and they take the shape of the container. Let me use a spotlight that here for you. So that would be easier for you. So liquids have no definite shape and so does the gases and they take the shape of a container. I hope that is easily understandable. Now, there are 2 points in this portion that are still need to be explained, the density as well as the fluidity.
So let's explain density first. The solids have a high density. And here, I'd like to quote some examples so that the students can understand it. So what I'm going to do is that I'm going to put up an example over here. Let's, for solid, take an example of ice. For liquid, take an example of water. And for gases, take an example of steam. Okay. That way, you would understand that the density of gases are low because steam is actually expanded over a larger area. There are less number of particles. Even you can move your hand through steam. It might be a little difficult. It might be hurting as well, as the temperature of the steam is too much for the human hand to handle, and it would be difficult. But you can also move your hand through the water because it has moderate density. But when we talk about solid, you cannot move your hands or you cannot move yourself through a solid. It would be difficult until unless you make some space for yourself. The density is so high, you cannot move through it. See, I hope that is easy enough to explain. Now, not just that, take a look at how these things act or behave. Now, you would see that the density of ice is high, and that of water is moderate, and that of gas is low. But here, the term moderate to high is written for liquids. Why is that so? So, I would like to explain it at the bottom and make sure you also write that on your book or the soft copy of the book, whichever one are you using. Okay. So, if we talk about liquid and we're talking about moderate and we're talking about high density. So when we talk about moderate, we can give the example of water. However, when we're talking about high, we can give the example of honey. And let's now relate it to fluidity in order to understand fluidity and the density values at the same time. Now, in case of fluidity, you know solids do not flow. Solids cannot move from one place to another on their own. Liquids, however, can flow easily. For example, water may flow from one point to another point. If there is slope or if there is a difference of height between 2 points, the speed of water will increase. And you already know that. In case of gases, they even flow easier than the liquids, which means the gases flow. हम जैसे स्कूल डेज में ऑफलाइन डेज में पढ़ने आते थे, वापसी पे घर जाते थे, घर का दरवाजा खोलते हैं, जैसे एंटर होते हैं तो वहां से हमें किचन से खुशबू आती है कि मामा ने आज बिरयानी पकाई हुई है. सो यू नो द गैसेस मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ठीक है, आपका रूम आपको अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा टैकी लग रहा है, ठीक है, आप एक एयर फ्रेशनर उठाते हैं, रूम के एक कॉर्नर में स्प्रे करते हैं, सून द होल रूम स्टार्ट्स टू गिव अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस. ठीक है, so there you go, the gases flow very easily and take very less time to move from one point to another. Okay, this is fluidity, and the density and fluidity can be explained at the same time in cases of liquids. Liquid के लिए हमने moderate भी लिखा हुआ है, high भी लिखा हुआ है density में, so वो मुश्किल होता है understand सर करना. आपकी आवाज नहीं आ रही है. Understand? क्या सबको मेरी आवाज नहीं आ रही? नो सर, आपकी आवाज आ रही है. नो भी और आ भी रही है. अच्छा, बेटा हो सकता है कि आपके एंड पे थोड़ा सा स्पीड का प्रॉब्लम हो. ठीक है, डोंट वरी, अगर किसी भी स्टूडेंट को मसला आता है यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर द रिकॉर्डिंग. वेल, रिकॉर्डिंग से आपकी रिविजन भी हो जाएगी और रिकॉर्डिंग से फिर कोई अगर कमी रह गई तो वो भी पूरी हो जाएगी. एन ऑनलाइन सिस्टम व्हाट वी डू इज दैट कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रिसिटी या नेटवर्क का इशू या इस तरह का वॉइस या वीडियो इशू फेस करना पड़ता है तो इट्स बेटर दैट यू गो फॉर रिकॉर्डिंग. फिर आप ऐसा करेंगे कि C1 के ग्रुप में, या मैं अपना नंबर सेपरेटली कल आपको दे चुका हूँ, मुझे आप व्हाट्सएप कर देंगे कि आपको रिकॉर्डिंग चाहिए या टेक्स्ट मैसेज कर दें, व्हाटएवर इज इजियर फॉर यू, और फिर मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप में सबके लिए पुट अप कर दूंगा. ठीक है, यस सो moving back to the point, let's consider water and honey according to their fluidity. Have you ever seen honey flow?
अगर आप देखा हुआ है तो हनी की फ्लो स्पीड बहुत थोड़ी होती है. Let's suppose you have some honey in a jar and you'd like to put some on your plate. You have to wait. आप हनी का जार अगर टर्न ओवर भी कर देंगे ना, बिल्कुल अपसाइड डाउन भी कर देंगे, तो भी आपको वेट करना पड़ेगा. हनी जनाब जो है ना किसी इंतहाई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की तरह स्लो 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 चलते हुए जार से बाहर आते हैं. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, if you do the same thing with water, there you go, a big splash. The water is all over the place. Not just the plate, it's all over the place. सारी जगह पे फैल जाएगा. So the speed of water is far more than the speed of honey. So if you compare fluidity with density, then the words are moderate to high intensity are easier to understand. I hope कि इस टेबल में अब कोई भी ऐसा सेल, कोई भी ऐसी टर्म ना हो जो आपको ना समझ में आई हो. हाँ, एक चीज है, फ्लूइडिटी में इन्होंने स्मॉल एज रिप्रेजेंट किए हुए हैं. उन एज को उन्होंने बॉटम ऑफ टेबल पे लिखा हुआ है कि लिक्विड्स और गैसेस को मिलाकर हम फ्लूइड्स बताते हैं. क्यों? क्योंकि both liquids and gases can flow. However, the solids are not known as fluids because the solids cannot flow. See? So if there is any term in this table that you do not understand, let me know so I can clear it out for you. All right. So it's about time. हम इससे ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं. I've already taken 1 minute more from the next class. So what I'm going to do is that I'm going to stop the sharing. अगर आपको recording चाहिए तो बता दीजिएगा. Take a class, यहाँ से leave करें और जल्दी next class में जाएं without delay. अल्लाह हाफिज सर. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz.